आज महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस फैसले को अगर हमें क्रिकेट की भाषा में किसी को समझाना हो तो कुछ ऐसे समझाएंगे। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को नो बॉल फेंकी। फडणवीस ने अंपायर से झूठी अपील की। अंपायर कोश्यारी ने गलत फैसला दिया और उद्धव को आउट भी करार दिया और इस तरह से नो बॉल पर ठाकरे का विकेट ले लिया। लेकिन आउट या नॉट आउट का फैसला तीसरे अंपायर को करना था। लेकिन तीसरे अंपायर का फैसला आने तक ठाकरे मैदान छोड़कर मातोश्री चले गए। तो इस पर आज तीसरे अंपायर का कहना है कि तो अब उन्हें बल्लेबाजी के लिए वापस नहीं बुलाया जा सकता। अगर वे मैदान पर होते तो उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए कहा जाता। अब बाकी मैच जारी रखे। डिटेल्स और हो सकते हैं, लेकिन फैसले का सारांश क्रिकेट की भाषा में कुछ इसी तरीके से होगा। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आज महाराष्ट्र में चल रहे सत्ता संघर्ष का फैसला आया, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातों का समाधान सचमुच कर दिया है या अभी भी चीजें बदलने की कोई गुंजाइश है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। पिछले साल एकनाथ शिंदे शिवसेना की 40 एमएलएस को लेकर पार्टी से निकल गए थे। मुंबई से सूरत और सूरत से गुवाहाटी का सफर तय करके बड़े ही नाटकीय अंदाज में शिंदे ने महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराने का दांव खेला। पर्दे के पीछे से भाजपा का भी समर्थन शिंदे को हासिल था। गवर्नर कोश्यारी ने बिना ज्यादा वक्त गवाए फ्लोर टेस्ट करने का फैसला किया। आज उनके उसी फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा की। इतने सारे विधायकों को पार्टी से दूर जाते देख एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उद्धव ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और कुछ ही दिनों में शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की भी शपथ ले ली। हालांकि 10 शेड्यूल के नियमों के हिसाब से कोई भी नेता जिस पार्टी से वो चुनकर आए हो वो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। लेकिन शिंदे अलग भी हुए और इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हें ही असली शिवसेना माना। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। कोर्ट के फैसले से कुछ अहम मुद्दे पहले आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो शिंदे और 15 अन्य विधायकों को पिछले साल जून में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए आयोग नहीं ठहराया जा सकता। ये शक्ति स्पीकर के पास तब तक रहेगी जब तक कि न्यायाधीशों का एक बड़ा पैनल इस पर निर्णय नहीं करता। न्यायालय ने उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल करने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया, क्योंकि नेता ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण यानी फ्लोर टेस्ट का सामना करने के बजाय इस्तीफा देना चुना था। अदालत ने हालांकि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को शिंदे के गुट की मदद करने वाले फैसले लेने के लिए कड़ी निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने यह निष्कर्ष लगाने में गलती की कि ठाकरे ने विधायकों के बहुमत का समर्थन खो दिया था। ये गलती माना सुप्रीम कोर्ट ने। अदालत ने और कहा कि राज्यपाल के पास कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी और इस मामले में राज्यपाल के विवेक का प्रयोग कानून के अनुसार नहीं था। अब सवाल यह है कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश गलत था तो फ्लोर टेस्ट नहीं कराने के लिए उद्धव ठाकरे कैसे जिम्मेदार, और पहले का एससी का फैसला फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कैसे सही था? खैर, कोर्ट और जनता दोनों को भी सोचना जरूरी है कि राज्यपालों की असली भूमिका स्पष्ट हो। भगत सिंह कोश्यारी जैसे राज्यपालों द्वारा किए कृत्य से सभी राज्यपालों के वर्तन पर सवाल खड़े होते हैं। फैसले पर टिप्पणी करते हुए ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे लोकतंत्र की हत्या के बाद जीते, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जैसे मैंने दिया था। ठाकरे के शीर्ष सहयोगी संजय राउत ने इस फैसले को नैतिक जीत बताया। शिंदे के डिप्टी भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम संतुष्ट हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, आपने सत्ता के लिए विचारधारा को छोड़ दिया। शिंदे ने सत्ता छोड़ दी और विचारधारा के लिए विपक्ष में शामिल हो गए। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया, जिन्होंने आमने सामने की 8 याचिकाओं को क्लस्टर कर दिया था। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में उद्धव ठाकरे की टीम के लिए बहस की, जबकि हरीश साल्वे, नीरज कौल और महेश जेठमलानी ने एकनाथ शिंदे के खेमे का प्रतिनिधित्व किया। फरवरी में विवाद पर फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग ने शिंदे को शिवसेना पार्टी का नाम और उसका धनुष्य बाण चिन्ह प्रदान किया था। ठाकरे के छोटे गुट को शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नाम दिया और एक ज्वलंत मशाल का प्रतीक भी उनका सिंबल बना दिया। समराइज करने के लिए दर्शकों को बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब दल बदल निषेध अधिनियम लागू होता है तो शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष एक उचित अवधि के भीतर निर्णय ले। अब सवाल यह है कि विधानसभा अध्यक्ष जो भाजपा के राहुल नार्वेकर है, उनका फैसला कब आएगा और क्या ये दावा कर सकते हैं कि अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगे वो न्याय दिलाएगा? मामला बड़ा पेचीदा नजर आ सकता है और दर्शकों के मन में ढेर सारे सवाल भी हो सकते हैं कि अगर एससी ने शिंदे और गवर्नर कोश्यारी की सभी बातों को गलत ठहराया
तो शिंदे के डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले को क्यों टाल दिया? Okay, it's a very important judgment today by the Constitution Bench of Supreme Court, comprising of 5 judges. The judgment is authored by Dr. Dhananjay Vai Chandrachud, our Chief Justice, and you see an imprint of his knowledge and his thinking in this particular judgment. It's a judgment probably balancing many of the facets of our political system. And if you go through the conclusion, it's a 141-page judgment. The fine prints of it, one will have to read the entire judgment to come to a conclusion. But if you see the fine prints, the most important thing that the judgment says is that the current government in Maharashtra continues. So they're not removing Mr. Eknath Shinde from the post of Chief Minister or restoring Mr. Uddhav Thackeray as the Chief Minister. Some would have wanted that Mr. Uddhav Thackeray be restored as the Chief Minister of Maharashtra. However, that has not taken place. And the judgment is well reasoned on that point as to why Mr. Uddhav Thackeray cannot be restored as the Chief Minister, because the primary petition had the main submission that Mr. Shinde came to the political seat by certain means which should not have been allowed, and in the effect that Mr. Uddhav Thackeray should be brought to the power again. However, that has not been accepted by the court. There are ample reasons for it. The last part of the judgment deals with the reasons as to why the action of the governor or the discretion that the governor has used in inviting Mr. Shinde to be the chief minister is not bad in law. In the same vein, the judgment says that the discretion by the governor in directing a floor test was not good. So you now see that the floor test by which or because of which Mr. Uddhav Thackeray resigned is said to be bad in law. However, the judgment says that the swearing in of Mr. Eknath Shinde or the appointment of Mr. Eknath Shinde, the discretion used by the governor in that place is good in law. So one thing is bad in law, the other thing is good in law. And there are well defined reasons for both these aspects in the judgment. Another important issue which the judgment flags is the decision of a constitution bench again of the 5-judge bench in Navam Rebia case. Now that judgment has been referred, or the correctness of that judgment has now been referred to a 7-judge bench, which was what the petitioner's advocate wanted, that the judgment given in Navam Rebia case should be referred to a larger bench, because the decision of the speaker to decide on a disqualification of an MLA during the same time was given to speaker. However, if there is a resolution to be moved against the speaker himself, was the speaker justified in deciding these disqualification petitions against the MLAs? Now, that question will be now decided by the 7th bench, which has not been answered in this. And there are again reasons why 7-judge bench has to look into the correctness of the decision of the 5-judge bench decision rendered in Navam Rebia case in 2016. That is my opening remark about the judgment. What was being said was that the governor role in inviting a floor test was wrong. Now what happened then? A floor test was invited. The chief minister did not follow the route of going to the election or going to winning or losing the floor test. He, before the floor test, resigned. The Supreme Court now says, since you did not face this floor test, therefore, you had resigned. Now, once the chief minister, the then chief minister, had resigned, there was no other way but to invite the other
side to form government or to face floor test. That is what the governor did. So the first act of the governor in exercising his discretion to call for a floor test is held to be wrong in law. Now that does not mean that the next decision that the governor takes, which is when a chief minister resigns, what next is to be followed. The other party with the largest majority, the BJP with 106 MLA probably, gave support to the faction of the Shiv Sena. Therefore, they were the largest side. The governor then in his discretion said, of course, if the other side has resigned, let the other side come and a floor test may be done. Therefore, the first act of the governor is wrong. However, the second act of the governor is right. And Article 164 1B of the Constitution, if you look into, the appointment of Mr. Shinde is therefore not barred by law or not barred in law. He was being short of majority was only to be proved in an assembly in a floor test. No one else decided elsewhere. You cannot decide it on a street that whether the government is having the majority or not. It is to be decided in the floor of the house. And on the floor of the house, the Shiv Sena or the then chief minister, Mr. Uddhav Thackeray, failed to take that test. Now, once you don't take that, had Mr. Thackeray took that test, then that question before the Supreme Court was more interesting. Or your question today would have been more interesting. What if had Mr. Thackeray faced the floor test and he would have lost? Then would he have been restored today or not? But that question cannot be answered today as he had already resigned by that time. That's what I said in my opening remark, that it's a well-reasoned judgment. I would say both sides would be happy with the judgment as you get to see that the means that was adopted has been deprecated by the court. The means which the speakers, after the election of the speaker, the disqualification notice against the speaker that was pending, the disqualification that was pending against the MLAs. So there are many things. It is not just one political question that is to be answered, or the recognition of a political party or the faction of a political party, the appointment of a whip, the appointment of a new whip. So there are many issues. It is not just that it is one issue on which the judgment is to be read. There are multiple issues. Who appoints the chief whip? What happens when there is a faction in the chief whip? Is it the legislative party that appoints him? Is it the political party? The court has ruled that it is the political party. Now, so you have to understand that it is not a victory of one side. It is a victory for anyone who is interested in law, anyone who is interested in the working of a constitution, anyone who is interested in strengthening democracy. So everyone wins in such kind of a judgment. Eknath Shinde is happy because his position today as the chief minister remains intact. He is not to be removed as the chief minister, and there are reasons, and there are well-reasoned reasons for it. However, Mr. Uddhav Thackeray is happy because he now knows that, look, the decision that was taken to remove the chief whip, or the decision which was taken for the election of a speaker, are now all in question, and that has all been decided. So they are happy for the decision on those parts. The other side is happy because their position as the chief minister remains. So none of them would be unhappy today with this judgment, and therefore both the sides would be happy.